Good morning, students. Earlier we had discussed about the design of post tension deck slab bridge. A small part of that design was remaining. If you remember, we were talking about providing the supplementary or untensioned steel. If this is the bridge, here is the direction of motion. It is a one-way bridge as the supports are provided at these two ends. So here we need to provide the longitudinal and transverse steel in the two perpendicular directions in bottom as well as in top. Earlier also I had told you the direction of bending is the direction of span. So in that direction we will provide steel first and then we provide steel with the other direction also. That is for the purpose of ductility, that is for arresting the cracks. From the ductility criteria, limit state of serviceability, yes, serviceability, limit state ductility, and serviceability, limit state cracking. From that, if you remember, we had determined the minimum area of steel to be provided in the direction of length, that is longitudinal, that is in the direction of span. In case of suppose if it is a two-way slab, say this is Lx, the smaller length, say it is Ly, if it is a two-way slab when it is bonded from all the sides. So in that case, first we provide the reinforcement in the shorter direction. Then we provide the reinforcement in the longer direction. If it is a two-way slab. But here it is a one-way slab. So in the direction of the span will be considered as the longitudinal. What was the minimum area of steel? We had confirmed that certain limit was there for the area of steel, the minimum and maximum. And we need to provide a little more than the minimum required because anyway it is an untensioned steel, supplementary steel. It is not supposed to carry the tension. Whatever tension will be there, that will be carried by the twist tracing cables. So this is additionally provided for the ductility requirement, for the crack control requirement, because of any reason or accident or temperature or shrinkage, if any stresses are developing there, then those are to be taken care of. For that purpose, we are providing this steel. So how much was the area of steel? ये आपके पास अवेलेबल रहेगा and AS maximum वो अभी हमने सब कल डिटरमाइन किया था. Please give me the answer. This is the area of steel which is required in the longitudinal direction. So here is the longitudinal direction. That is the direction of span in case of one-way slab. For two-way slab, it will be the shorter span in parallel to the shorter span. What was the minimum area of steel required? वो आंसर आपके पास अवेलेबल रहेगा, हमने पिछले लेक्चर में किया था. आमिर, please give me the answer for the minimum area required and the maximum area required that we were having in the last lecture. हमने ये कैलकुलेट किया था. Minimum and maximum area of steel required. मिनिमम के लिए हमने दो तीन क्राइटेरिया देखा था अलग अलग. वन फ्रॉम द डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट, फिर वहां पर एक था 0.0013 BD, उससे कम रहना चाहिए. फिर दूसरा एक क्राइटेरिया था क्रैक कंट्रोल से. We had calculated the minimum area of steel required from the crack control criteria also, and the greater of the two is to be considered as the minimum area. कुछ 1100-1200 कुछ आया था, I don't remember now. कितना था आमिर? Are you there? हाँ, thank you आमिर. 1127.8. So it was 1127.8 mm square. And what about the maximum? 1125. 112.5
into 10 raised to power 3 mm square. This is the limit for the minimum and maximum. हमने डिस्कस भी किया था, मिनिमम से कम रखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा. So now we are talking about this area. Suppose this is the minimum. So we have to assume some diameter of bar. If suppose I assume 10 mm dia bar. So in that case, what must be the spacing? The spacing is equal to area of one bar divided by the area of steel required multiplied by 1000, because we solve in reference to 1 meter width. So the area of one bar for 10 mm, it will be pi by 4 into 10 square divided by the area of steel required is 1127.8 multiplied by 1000. So what must be the spacing? What must be the spacing? Will someone please answer this? $69.64. Is it right? 69.64. एरिया ऑफ एक बार कितना हो जाएगा? हाउ मच इज एरिया ऑफ वन बार? 78. ओके, ठीक है. सो इट इज वेरी क्लोज. अगर हम इतना स्पेसिंग रखते हैं तो बहुत नजदीक नजदीक हो जाएगा. 100 mm, 150 mm नॉर्मली हम इतना रखना चाहिए. 100 mm से तो ज्यादा ही होना चाहिए. So what will we do? This spacing is very close. So try 12 mm as the diameter of bar. Okay. So what it will be in that case? Good morning. Good morning, Sahil. So it will be now pi by 4, 12 square divided by 1127.8 multiplied by 1000. So what it will be? ये जो 69.64 है मल्टीप्लाइड बाय 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर कर देंगे तो वी विल गेट 100.28. ठीक है, ये ठीक लगता है. ये 100.28. सो से वी आर प्रोवाइडिंग 100 mm center to center. Okay, in the direction of span, because it is a one-way slab. So this is the steel that we are talking about in the direction of span. In the direction of span means this is the steel we are talking about. Right? ये जो हमने डॉट 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 बताया है, that is the steel that we will be providing first, because that is the steel which require greater effective depth. From the top fiber to this is the effective depth. So that requires greater effective depth. So we are providing 12 mm torque at 100 mm center to center. See, what are the limits? हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? Please refer another clause. It is available here for the spacing. Please refer the clauses which are in IRC 112. It is available on page number 181. It is slab. This clause 16.6 I am talking about. It is on page number 181. Please refer clause 16.6.1.1. It is on page number 181. It is of IRC 112/2011. Here you will find the fourth part of that clause. What is that? The maximum spacing of the bar for the structural purpose is as follows, where H denotes the total depth of the slab. It is on page number 181, the fourth part of that clause. The maximum spacing of the bar for the structural purposes is as follows, where H denotes the total depth of the slab.
for the principal reinforcement in one-way slab and reinforcement in both directions in two-way slab. Principal reinforcement in one-way slab, that is nothing but the reinforcement in the direction of the span. अगर one-way slab रहेगा, right? So which of the direction is called as the span? The shorter direction is called as the span in case of one-way slab. So that is the principal direction. For principal reinforcement in one-way slab. अभी यहाँ पर सपोर्ट दो ही तरफ है, so this is a one-way slab. This is how it is subjected to. So this is the reinforcement which is in the direction of the span in case of one-way slab. And reinforcement in both directions in two-way slab. क्योंकि two-way slab में दोनों डायरेक्शन में मेन reinforcement ही रहता है. S max shall be lesser of 2h or 250 mm. So this spacing must be less than or equal to 2h or 250 mm. These are the guidelines. Where h is the overall depth of the slab. So how much is the overall depth of the slab? Here the depth was considered as equal to 450 mm. So it will be 2 multiplied by 450. That comes to be 900 mm center to center. So whatever spacing we are trying, it must be less than 2h and it must be less than 250 and it is satisfying both the requirement. So it is okay. All right. Acceptable. Is it okay? So we are providing 100 mm center to center. It is satisfying both the requirements. That is given here. Page number 181. The maximum spacing of the bars of structural for structural purposes is as follows, where h denotes the total depth of the slab. For principal reinforcement in one-way slab and reinforcement in both directions in two-way slab, F max shall be lesser of 2h or 250 mm. Right? That's all. So here we are providing 100 mm and which is within the limits. Now, what about the reinforcement to be provided in the other direction? This is one-way slab. Now, what are the guidelines for the reinforcement? This is longitudinal. This is for one-way slab we have done. Now, the steel to be provided perpendicular to this. What are the guidelines for that? Please refer 16.6.1, sorry, 16.6.1.1. It is part 3 of that clause on page number 181. This is for the solid slab. Secondary transverse reinforcement shall be provided in one-way slab. This should be at least 20% of the main reinforcement. So, secondary reinforcement. How much it must be? It must be minimum 20%, so 0.2 times of. What is the steel which is provided in the main direction? So, the steel that was provided in the main direction is 1127.8 multiplied by 1127.8 mm square. कितना हो जाएगा? 0.2 multiplied by 1127.8 mm square. (263.9 mm square). Now let us try, as it is very small quantity. Say if suppose I try 8 mm dia, Fe 250 grade or Fe 415 grade of steel. So what must be the spacing? Pi by 4, area of 1 bar divided by the total area of steel required multiplied by 1000. So how much is the spacing required? 225.56. So it is equal to 225.56 mm, right? Center to center. What are the limits for the spacing? Please refer the guideline for the spacing. It is the same clause which we had already discussed, 16.6.1.1 on page number, it is part 4 of that, that is page number 181 and extended to 182. So in that fourth part of the clause, for secondary reinforcement in one-way slab, S max shall be less than 3h or 400 mm. So it must be less than or equal to 3 times of h, where h is the overall depth of the slab. It is 3h or less than or equal to 400 mm center to center.
So it is 3 into 450. So it must be less than 1350 mm center to center, or 400, the lesser of the two we have to consider, and it is satisfying the requirement. So say we are providing at 200 mm या 225 भी provide कर सकते हैं mm center to center 8 mm torque. So this steel we are providing, or the secondary steel that we are providing here is 8 mm torque, say at 200 mm center to center, and in the main direction this steel we are providing as equal to 12 mm torque and 100 mm center to center. That's all. So this is all about the supplementary steel or the secondary steel or the additional steel that is to be provided from the ductility and crack control criteria. Is it okay? हमने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे पहले हमने लॉन्जिट्यूडनल स्टील प्रोवाइड किया, फिर देयर इज ए गाइडलाइंस हियर दैट द सेकेंडरी स्टील मस्ट बी मिनिमम 20% ऑफ द मेन स्टील इन केस ऑफ वन वे स्लैब. So the main steel was 1127.8. So 20% of that is considered, and accordingly, finally, we come to these figures. Is it okay? Jai. Okay. A very happy Republic Day. So this is all about the main reinforcement and the secondary reinforcement. अभी और एक पार्ट रह गया है. What is that? That is about the end block, the design of end block. End block, or that can also be called as end zone. What is end block or end zone? End block or end zone. See, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं ये क्या कंसेप्ट है. व्हाट इज दिस एंड ब्लॉक और एंड जोन? इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर, say this is the longitudinal view, right, of the beam. Suppose ये कोई बीम है, the cable is provided here. Suppose, तो केबल को यहां पर इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन we need to provide anchor plate. Say this is the anchor plate, and here the load will be acting. This is the twisting force that will act here. Then as per the Saint Venant theory, for certain distance near the support where the concentrated force is acting, the stresses are very complex and three-dimensional in nature. As per Saint Venant's theory, for certain distance near the support where the pressing force is anchored, where the cable is anchored, here for certain distance, the stresses distribution in this part, that is called as the end block or the end zone, the stresses are very complex and three-dimensional in nature. Here the tensile stresses will act, right? तो यहाँ पर टेंशन आएगा, दिस इज द टेंशन जोन. यहाँ पर कॉम्प्रेशन आएगा, दिस इज कॉम्प्रेशन जोन, एंड हियर द स्ट्रेसेस आर बिकमिंग यूनिफॉर्म. यहाँ समवेयर हियर द स्ट्रेसेस आर बिकम यूनिफॉर्म. इसके आगे स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म रहेंगे. So this is a very complex zone. यहाँ पर क्या होता है? Because of this tensile stresses acting from this point, from this line or from this plane where the pre-stressing force is applied, ऊपर वाला पार्ट ऐसे ऊपर जाने की ट्राई करेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे आने की ट्राई करेगा, and it will get burst. It will try to get split from this horizontal plane. The element will try to get split from that horizontal plane, right? So that is nothing but because of the bursting. So we need to calculate that the bursting force which is acting here, and so as to resist that bursting force, we have to provide reinforcement, and that reinforcement will resist the bursting. क्या होता है? As per the Saint Venant's theory,
In case of post-tension members, where the cable is anchored, we need to provide a anchor plate. एंकर प्लेट प्रोवाइड करने का पर्पज ये है वॉट एवर दैट प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज एक्टिंग दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए ग्रेटर एरिया. वॉट एवर दैट प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज एक्टिंग हियर इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए ग्रेटर एरिया. अगर आप देखेंगे यहाँ का साइड व्यू में ऐसे दिखेगा क्रॉस सेक्शन में. Suppose here the anchor plate is provided. Is it right? The cable is anchored here. So an anchor plate normally we provide so as to distribute the force on a greater area. It is same as in case of the columns. We provide column footing below the column so that the load is to be distributed on a greater area. अगर हमने greater area पर distribute नहीं किया, so a concentrated load will be acting at a point, and because of that the stresses concentration will be there, and there is possibility that the concrete may get crushed here. And in case of the columns, अगर कॉलम को मैंने डायरेक्टली सॉइल पर रख दिया, सो द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ लोड विल बी एक्टिंग ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, और वहां पर सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम रहता है. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द कॉलम विल गेट पेनिट्रेट इन द सॉइल. सॉइल का एक्सेसिव सेटलमेंट होगा एंड स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जर्व विद द क्रैक्स. यू विल ऑब्जर्व क्रैक्स इन द स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल. कॉलम भी अंदर चला जाएगा. देयर विल बी uneven settlement of the soil. So because of that you will observe cracks in the structure. तो ऐसा possibility है. That's why we provide column footing in case of column. Similarly here, so as to distribute the force on a greater area, we need to provide an anchor plate. This is the anchor plate. यहाँ पर क्या होता है, even if we are providing anchor plate, the stresses distribution for certain part from the support where the cable is anchored, they will not be uniform. उसके आगे stresses uniform रहेंगे. यहाँ पर 3 dimensional and very complex in nature के रहेंगे. यहाँ पर टेंशन एक्ट होगा. अगर आप देखते हो ये पार्ट में, so this is how we say that the tensile stresses will act within this part. यहाँ पर कॉम्प्रेशन है, ये जो पार्ट है यहाँ पर पहले कॉम्प्रेशन है, फिर आगे टेंशन रहेगा यहाँ से. So this is what part which is subjected to tension. और ये टेंशन एक्ट होने की वजह से यहाँ से ऊपर का पार्ट ऊपर और ये नीचे से from that plane, it will try to split the element, it will try to burst the element from that plane. So that is called as the bursting of the end block. End block burst हो सकता है. अगर burst होगा तो ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट split हो जाएगा from that plane. So how much is the force acting here, that we need to calculate, and to resist that bursting we need to provide the reinforcement. That is called as the bursting reinforcement, to resist the bursting reinforcement. Okay. Which spacing? Which spacing? Ashish Yadav. Okay, fine. Now reinforcement. Now we are talking about the this end block. So what we need to do here is we need to provide reinforcement. Acha, sometimes when a single force is very large in magnitude, we provide 2 cables so that the force will get distributed. तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने का बेनिफिट क्या रहेगा, ये जो एंड ब्लॉक पहले बड़ा आया था, एंड ब्लॉक डायमेंशन विल गेट रिड्यूस. तो एंड ब्लॉक का डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगा. अगर एक सिंगल फोर्स रहता है तो एंड ब्लॉक दूर तक आएगा. सो वी नीड टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट फॉर ए ग्रेटर डिस्टेंस. इफ सपोज सिंगल मैग्नीट्यूड इज लार्ज, so in that case we distribute that into 2 cables, so the 2 anchor plates will be provided. This is how we will see at the end. This is one anchor plate, here is the another anchor plate. So the position or the depth of this end block will be less in the direction of span. So lesser magnitude of area we need to provide. Okay. So what we have to do here is
we need to calculate how much that bursting force is. Now come to our case. ये जो हमने ब्रिज डिजाइन किया है, the bridge that we have designed, this is the wearing coat, footpath, right? Say here is the neutral axis, and here the cables are provided. Is it right? At support, at support, the cables are coinciding with the neutral axis. That is what we had considered. What was the spacing? The spacing is 390 mm center to center. Okay. So I take one cable. I take a case of one cable. तो कैसा रहेगा एक केबल? Half the spacing to the left and half the spacing to the right. So say this is the element. The width here will be equal to 390. Here is the cable at neutral axis. This depth is equal to 450 mm. अच्छा फिर ये 390 थोड़ा हमने कम लेना चाहिए. ओके, ठीक है. This is 390 and this is 450. Here is the cable at the neutral axis. Is that all right? Suppose I provide a plate here of 100 mm by 100 mm. मैंने assume किया. What was the diameter of this duct? The diameter of duct is 50 mm. ये हमको पहले से पता है diameter of duct. जब हमने डिजाइन किया था that time we were having 100 mm by 100 mm anchor plate I have provided. Whether this plate assume 100 mm by 100 mm anchor plate. Normally we prefer to provide square anchor plate. Suppose I am providing this. ये डायमेंशन ठीक है या नहीं है? How to verify? For this we require to have IS 1343. I forgot to tell you to keep IS 1343 available. या तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होगी तो यू कैन रेफर दैट, या अगर हार्ड कॉपी रहेगी तो प्लीज रेफर दैट IS 1343. Please refer IS 1343. Here you will find it is on page number 26, IS 1343 2012. It is clause 19.6.2. It is on page number 26 of the code. End zone in post tension members. End zone. And end zone is associated with the post tension members. Here it is. What is mentioned here? On the area immediately behind the external anchorages, the permissible unit bearing stresses of the concrete, after accounting for losses due to elastic shortening and setting of anchorages, shall not exceed 0.8 times of FCK, whichever is smaller. So there are two limits. The stresses just behind the anchorages. These are the bearing stresses. Bearing stresses.
is equal to 0.48 FCI under root of ABR divided by A punch, or 0.8 FCK. It must be less than or equal to the permissible bearing stresses. Okay, fine. What is this clause about? This is 19.6.2.1 on page number 26 of IS 1343 2012. The acting bearing stresses just behind the anchor is, see, ये है anchor plate. Now what is that bearing area? How will you get the bearing stresses? What is the bearing area? क्या करना चाहिए? From this plate, you see the projection on all the sides. Right? ये कितना projection है ये देखिए. Overall depth is 450. If this depth is 100 mm, so the remaining is 350. If that is shared by the two sides equally because it is at the center, so that will be 175. So this distance is 175. So here also the distance is 175. Now this total width is equal to 390 if it is 100 mm. So the remaining is 290. If it is 290, then this distance is 145 mm and 145 mm. So whichever projection is smaller, the least projection, consider that much of projection on all the sides, and we said that that is the bearing area on which the effect of this load will be. What you need to do, जहां पर केबल है, जहां हमने एंकर प्लेट किया है, हमने सर्टेन डायमेंशन अज्यूम किया है, then you see what are the projections available on all the sides. Whichever projection is smaller, make a square of that. So it is 145 on either side. It is 175 on either side here in the vertical direction. So the lesser of all is 145. So consider 145 on all the sides. It is 145, 145 here also 145. So this is the bearing area. This is the bearing area. What will the dimensions? 145 plus 145 plus 100. So that will be 390 by 390 is nothing but A bearing. This is the bearing area. And what about the punching area? This is the plate. ये जो केबल है यहाँ पर, ये केबल भी produce that compressive force. The moment the cable is cut, it is anchored. It will try to come to its original. So it will put a thrust on the concrete, and this plate may get punch inside. ये प्लेट अंदर पंच हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने केबल को पहले टेंशनिंग किया, फिर यहां पर मैंने उसको एंकर किया, ये केबल कट किया. द मोमेंट इट इज कट, इट विल डेवलप ए कॉम्प्रेसिव फोर्स. जब ये कॉम्प्रेसिव फोर्स यहां पर आएगा, सो इट विल ट्राई टू पुश दैट प्लेट इनसाइड ऑफ द कंक्रीट. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द पंचिंग. प्लेट अंदर पंच नहीं होना चाहिए. इट इज सेम एज इन केस ऑफ द columns. If you might have studied in semester 6 or in semester 7 also about the columns. कॉलम अंदर पंच हो सकता है, तो हम पंचिंग शेयर लेते हैं कॉलम का. We take the punching share on the columns, the punching share check on the columns, on the column footing. So same is the thing here. ये प्लेट अंदर पंच हो सकता है. There shall not be any kind of punching of the plate inside. So we have to take care about the dimensions of this plate. So what will the punching area? Punching area is nothing but area of that plate. So A punch is nothing but 100 by 100. प्लेट में गेट पंच, क्योंकि ये जो कॉलम, ये केबल है, केबल हमने स्ट्रेच किया था, जब उसको एंकर किया, कट किया, तो इट विल प्रोड्यूस दैट कॉम्प्रेसिव फोर्स. कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से ये प्लेट पूरा अंदर कंक्रीट में पंच हो सकता है. सो दैट इज द पंचिंग एरिया. दिस इज द बेरिंग एरिया. Now put here, what are the stresses which are acting in this part, that is nothing but the bearing area. So the bearing stresses just behind the anchorages. कितना stresses act हो रहा है? Those will be equal to 0.48 FCI under root of ABR divided by APUN, or 0.8 times of FCK, whichever is smaller. That is considered as the bearing stresses.
These are permissible. These are these are permissible. These are the permissible bearing stresses. The lesser of the two are called as the permissible bearing stresses. So calculate the permissible bearing stresses. 0.8 FCI. What was the strength of concrete at the time of transfer? If you remember, we had considered M60 grade of concrete, and it was considered that the strength of concrete at the time of transfer was 50 MPa. If you remember, ये डेटा हमने क्वेश्चन में लिया था. The grade of concrete is 60 and at the time of transfer, अगर आपको याद रहेगा एक क्लॉज ये भी था कि ट्रांसफर के टाइम पर it cannot be less than 0.8 times of FCK. ऐसे क्लॉज था. जबकि नॉर्मल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए 0.5 टाइम्स ऑफ FCK है, बट फॉर ब्रिजेस इट इज गिवन एज इट इज 0.8 टाइम्स ऑफ FCK. In IRC it is mentioned. So FCI, that is nothing but 50 MPa under root of ABR, the bearing area. The bearing area is 390 into 390 divided by the A punching is 100 into 100. Or 0.8 times of FCK is nothing but 0.8 multiplied by FCK is 60, so it is 48 MPa. The lesser of the two we have to consider as the bearing, the bearing stresses which are acting 0.48. So it is 24 multiplied by 390 divided by 100. कितना आ रहा है देखिए मुझे बताइए. और 48 MPa. The lesser of these two. How much it is? 0.48 into 50 is 24 and root this बाहर आकर इतना हो गया है. कितना आता है ये कैलकुलेशन? 25 चौक 100. समथिंग क्लोज टू 100 होगा. What is the answer? 93.6. So is equal to 93.6 MPa. इतना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही M60 है. So the lesser of the two we have to consider as the permissible stresses. So the permissible stresses can be called as 48 MPa. .48 FCI under root of ABR divided by APN. So these are the permissible. And what are the stresses acting? The stresses acting. How much was the force in one cable? How much was the force in one cable? That is nothing but the pre-stressing force in one cable divided by the area. Area कितना है? 390 by 390 is the bearing area. So you will get the bearing stresses acting. Bearing stresses acting. How much was the force in one cable? अब मुझे याद नहीं आ रहा कितना हमने 7 cables कंसीडर 7 wires were considered. I think 7 wires were considered of कितना 12 mm diameter. This is the area of steel and the permissible values of stresses were 0.85 times of 0.85 times of FCI 1600 MPa. वो अलग अलग गाइडलाइन थे. 0.8 टाइम्स ऑफ 0.9, 0.85 टाइम्स ऑफ 0.87, 0.85 टाइम्स ऑफ 0.85. ऐसी 3 अलग अलग गाइडलाइंस. We had considered the least of all 0.8 times of 0.85. So that was nothing but the force that was carried by one cable. What is the force carried by one cable? Thank you, Patel. Thank you, Noman. This is to avoid punching. This is to avoid punching. पंच नहीं होना चाहिए. To avoid punching. अगर ये पंच नहीं हो रहा है तो it means that whatever dimension we have provided is all right. How much is the force carried by one cable? There were 7 wires of 12 mm diameter and the
characteristic tensile strength of steel or the ultimate tensile strength of steel was 1600. So it is permissible values of stresses are considered as 0.85 या 0.85 नहीं, मुझे लगता है पॉइंट कितना था यहाँ पर 0.85 है ना, 0.85 एक ऐसी भी था 0.75 टाइम्स ऑफ एफपी. देयर वाज वन क्लॉज, ये यहीं से आता है ये ऐसे. तो कितना था, हाउ मच वाज द फोर्स कैरिड बाय वन केबल, 915.2. So it is 915.2 into 10 raised to power 3 divided by 390 by 390. चलिए कितना हो रहा है बताइए मुझे. How much are the stresses acting? How much are the stresses which will be acting just behind the anchorage, the bearing stresses? Force divided by area. These are the stresses which are acting just behind the anchorages. हम्म 400 416 50 के आसपास कितना आ रहा है, 6.017. Is that? समझो कि 400 और 400 हो गया है, ये गया, ये गया 16 और ये कितना हो गया, ये 160. ठीक है. How much? 6.17. So the permissible are 48, whereas the actual stress is acting at 6.17. It is much greater than 6.17 MPa. It means that whatever dimension we have provided is sufficient. Okay, fine. 6.017. Okay, 6.017. So whatever dimension we have provided is sufficient because we are having considerable bearing area here. So there is no possibility for punching of the anchor plate. So that is the first check. हमने पंचिंग को कंफर्म कर लिया है कि whatever dimension we have provided is sufficient. How will you determine the thickness of that anchor plate? Thickness of anchor plate is nothing but the pre-stressing force divided by the shearing area. Pre-stressing force divided by the shearing area. How much is that shearing area? See, this is the anchor plate. Here is the duct. So whatever this diameter of the duct, on the basis of that, we will get the value of pi d, the circumference multiplied by the thickness, whatever is the thickness of this plate. So that will give us the shearing area. And you will get the shearing stresses, force divided by the area, you will shearing area, you will get the shear stresses, and they must be less than or equal to 0.4 times of Fy. Where Fy are the yield stresses of this steel. Fy yield stresses of plate material. Normally we provide mild steel, so Fy is equal to 250. The yield stresses. So 0.4 times of 250 comes to be 100 MPa. So the pre-stressing force was 915.2 into 10 raised to power 3 divided by 100, and we get the shearing area. How much that shearing area will be pi into the diameter of the duct was 50 mm and let the thickness is t. So that will decide. ये सब बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है. That will decide the thickness of the anchor plate. So this will get cancelled. It will be 9152 divided by 50 pi.
must be equal to thickness. कितना रहना चाहिए बोलिए मुझे भी thickness. What must be the thickness of anchor plate? प्लेट पंच नहीं होना चाहिए, प्लेट शेयर नहीं होना चाहिए फ्रॉम वेयर द डायमीटर द डक्ट इज. नहीं तो वो डक्ट में से प्लेट, दैट प्लेट विल गेट शेड. इट शुड नॉट गेट शेड ऑफ. देन व्हाट मस्ट बी द थिकनेस? There shall not be any kind of sharing of the plane. It must resist the sharing. So the pre-stressing force divided by the sharing area must be less than or equal to the permissible values of shear stresses. It is 58.26. So provide thickness as equal to 60 mm. Is it right? So this is how we decide what must be the dimension of the anchor plate, what must be the thickness of that anchor plate which is to be provided at the end. तो प्लेट अंदर पंच नहीं हो रहा है, प्लेट शेयर नहीं हो रहा है. So we have got the required dimensions. Now to avoid the bursting, there shall not be any kind of bursting of that anchor, the end zone. अभी end zone कैसे रहेगा? See, अगर मैं साइड से स्केच करता हूं, if I sketch it from the side, here is the pre-stressing force acting. Here the pre-stressing force will be acting. It is 915.2 kilonewton, right? This is the center. From the side, मैं सिर्फ एक प्लेट की बात कर रहा हूं. What I had told you, if you remember, this is how the stresses will be acting for certain distance. This is the zone of compression. यहाँ पर ये जो ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, दिस इज कॉम्प्रेशन हियर. सो दिस पार्ट में गेट स्प्लिट. यहाँ पर कंक्रीट निकल जा सकता है बिकॉज ऑफ द स्पाइलिंग इफेक्ट. और यहाँ जहाँ वेयर इट इज गेटिंग कर्व अप साइड, द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस आर चेंजिंग. सो हियर दिस इज द टेंशन जोन. यहाँ पर तक कॉम्प्रेशन जोन है. इफ यू सी एक्चुअली हाउ द स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, यहाँ पर ऐसे रहेगा स्ट्रेसेस. यहाँ पर stresses are compressive in nature. For this part, the stresses will be tensile in nature. और ये जो because the stresses are very complex and three-dimensional in nature here. So as to resist these stresses, if these stresses are not resisted properly, so there is possibility that from this horizontal plane, it will get split into two parts. That is called as the bursting. So we need to calculate the bursting force. एंड ब्लॉक में तीन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. प्लेट पंच हो सकता है, प्लेट में शेयरिंग हो सकता है, या एलिमेंट एंड ब्लॉक में बर्स्ट हो सकता है. हमको तीनों के लिए रेजिस्टेंस देना पड़ेगा. सो एज टू अवॉइड द punching of plate, we need to provide suitable dimension of the plate such that the stresses must be within the permissible limit. So as to avoid the sharing of the plate, we need to provide sufficient thickness of the plate so that it shall not get shed off. Third, to avoid the bursting, we need to provide reinforcement in this region, here in this region. This is called as the end block or the end zone. In this region, we need to provide the bursting reinforcement. How to calculate that? We must know how much is the bursting force acting. So for that you please refer IS कोड में भी दिया है 1343 और IRC में भी दिया है. प्लीज रेफर IRC. मुझे जरा क्लॉज ढूंढने दो कहां पर है. लेट मी सर्च दैट क्लॉज. What must be the bursting force acting? What must be the bursting force acting? Please let me search. How much will be the bursting force acting? Okay.
bursting force मुझे ढूंढने दो। बहुत सारी चीजें बहुत सारी अलग अलग जगह पर दिया है, ढूंढना पड़ता है। bursting force ढूंढने दो मुझे। आई एम सर्चिंग। हाँ, पेज नंबर शायद 136 के आसपास रहेगा। प्लीज रेफर पेज नंबर 136। प्लीज रेफर पेज नंबर 136, 138। हाँ, it is available here. Please refer 13.5.1.1 on page number 136 of IRC 112 2011. Bursting reinforcement in end block for the post-tension tendons. Externally mounted anchorages, individual square end block. The bursting tensile force existing in an individual square end block loaded by symmetrically placed square anchorages or bearing plate may be derived from the table 13.1, figure 13.1. So first we will refer table 13.1. It is available on page number 136. What is it? It gives relation between yp naught divided by y naught. What is this yp naught and y naught? अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली देखता हूं तो ये ऐसे दिखने वाला है। Here is the anchor plate. Here is the cable. Whatever is the dimension of this plate is, it is 2 yp naught. और ये जो हमारा बेरिंग एरिया है, this was the bearing area. This is nothing but 2y naught. Okay. So what we have to consider is 2yp naught is nothing but the depth of the plate is 100 mm. So it is 100 divided by 2. How much this dimension was? This was the list of the dimension 390. So it was 390 divided by 2. So the bursting tension depends on the basis of the ratio of the depth of plate to the depth of this end block. Here it is. Sorry. Table 13.1, yp naught divided by y naught. So how much this ratio is? Will someone please give me the answer? 100 by 2 divided by 390 by 2.
For that, we are having the relation between the F busting divided by PK. PK is nothing but the pre-stressing force. इसका और इसका रिलेशन दिया है. There is a table. If this is 0.3, if it is 0.4, 0.5, like that. Then it is 0.26 is this ratio. 0.23, 0.16, like that. So what is the ratio here? 100 by 2 divided by 390 by 2. How much this ratio is? 0.256. So this is equal to 0.256. And if you see here, this table itself start from 0.3. So we will consider उसके पहले के values नहीं है. So whatever is the value corresponding to 0.3, the least available. अगर ये रेशियो सपोज 0.32 आता है तो फिर हमको यहाँ पर इंटरपोलेट करना पड़ता. इफ सपोज यहाँ पर ये वैल्यू अगर 0.32 आ गया होता देन हमको वी रिक्वायर्ड टू इंटरपोलेट द वैल्यूज हियर. लेकिन इट इज 0.256, दैट इज 0.3 से कम है. So we will consider this equal to 0.26. So get the value of F busting. That will be equal to 0.26 of 915.2 kilonewton. That was the force acting in one cable. So I will get the bursting force. How much is the bursting force? Please consider that bursting force. कितना आ रहा है? What is the value of bursting force? देखिए ये फिगर यहाँ पर सब पेज नंबर 137 के ऊपर एक्सप्लेन किया है. YP naught, YP naught, Y naught, Y naught, right? The area, all the things are defined here. Anchor plate or the bearing plate, 2 Y naught, Y naught, all the things are defined here. So how much is the bursting stress? What is the bursting force? 237.95. So it is 237.95 kilonewton. Okay, agreed. What is next now? After knowing this, you please refer the figure which is given on page number 137. What is that figure? आपको यहां दिखेगा ऐसे डायग्राम. This is 0.2 y naught up to here. This is equal to 2 y naught. This depth is 2 y naught. So how much from 39 mm to 390 mm? Within this part, the tension is acting. The bursting tension is acting. यहाँ तो compression है, यहाँ पर tension है. So we need to provide reinforcement in this zone. In this zone, we need to provide the reinforcement. Now, how to provide the reinforcement? कितना प्रोवाइड करना चाहिए reinforcement? So we have got the force. इतना फोर्स के लिए हमको reinforcement प्रोवाइड करना पड़ेगा, right? Okay. This diagram is available. This is from the figure available on page number 137, which is available on page number 137. Please refer that. So within this part, we need to provide the bursting reinforcement. Now this is the force. How to get the bursting steel area? 237, that is nothing but the F bursting must be equal to 0.87 Fy into AST. It is nothing but the permissible values of stresses multiplied by the area of steel. Because this is the force is equal to stress multiplied by area. So this is nothing but 95 into 10 raised to power 3 is equal to 0.87. Say I am using Fe415 for resisting bursting. ये जो बस्टिंग होने का चांसेस रहेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए सपोज वी आर यूजिंग Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील. सो दिस इज इक्वल टू 415. सो यू विल गेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड. कितना स्टील मुझे रिक्वायर्ड है बस्टिंग को रेजिस्ट करने के लिए? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड?
यहाँ पर लिखा है, इट इज ऑन पेज नंबर 136। वो जो टेबल दिया है 13.1, उसके नीचे लिखा है 2y0 is the side of the end block, 2y0 is the side of the loaded area. अगर सर्कुलर बेरिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं तो डेट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट square plate. F busting is the busting tensile force. This busting tensile force FBST will be distributed in a region extending from point 2y0 to 2y0 from the loaded face of the end block as shown in figure 30.1. सब डिटेल्स यहाँ पर दिया है. You need to refer this page number 136 and 137. Reinforcement provided in this region to sustain the busting tensile force may be calculated based on a tensile strength of 0.87 Fi, except that the stress should be limited to a value of corresponding to a strain of 0.001 when the concrete cover to the reinforcement is less than 50 mm. We will consider 0.87 times of Fi. So what is the area of steel required? The area of steel required will be 659.05. 659.05 mm square. Say this is required. If this is the area of steel required, then what we do? How do we resist this? हम यहाँ क्या करते हैं? Within this region, we provide net. We provide net in, right? Net means कैसे? Suppose जैसे एक नेट में मिनिमम 3 बार, एक नेट में मिनिमम 3 बार होना चाहिए. That is this. This way we make the net. This is one net. In one direction we are providing 3 bars. In another direction we are providing 3 bars. This is how we are making one net. Similarly, there will be a second net. Third, there will be a third net. Minimum we provide 3 nets. और ये नेट को रखते कैसे हैं? How do we keep this net? ये नेट को हम कैसे रखेंगे? Say this is one net. It is provided here. 1, 2, 3. मैं ये साइड से देख रहा हूं. So this is one longitudinal bar I will see, which is in the direction of depth. और ये 3 जो बार है उसके हमको सिर्फ सर्कल देखेंगे, डॉट. This is one net. Similarly, here is another net, second. This. There will be a third net here. Right? We provide reinforcement in both the directions, in vertical as well as in horizontal. Vertical direction में splitting होगा, there is possibility for splitting in the horizontal direction also. So as to take care of that, we provide this steel. Vertical direction में जब ये splitting होगा, so this steel rod will resist that splitting. अगर horizontal direction में splitting होगा, so these horizontal bars will resist that splitting. So the reinforcement is provided in both the direction. So whatever we got here, this is the area required in one direction. This is the area required either in vertical you say or you say in horizontal direction. That is the thing, but the area of steel required in one direction. Vertical हम इसको 3 नेट प्रोवाइड करेंगे. एक यहाँ, these are the minimum 3 नेट्स भी प्रोवाइड. अगर बहुत बड़ा एंड ब्लॉक है तो मोर नंबर ऑफ नेट्स वी नीड टू प्रोवाइड. सपोज मिनिमम 3 तो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मिनिमम 3 नेट्स. कैसे रहेगा? 3 वर्टिकल बार, 3 हॉरिजॉन्टल बार. दिस इज वन नेट. 3 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 3, मिनिमम 3. अगर कभी नेट ऐसा नहीं रहता है तो नेट फिर कैसे रहेगा? समझ रहे हो? ये और ये दोनों को लैप कर दिया है. दीज आर लूप्स. सो दे विल मेक ए नेट लाइक दिस. तो हम ऐसे 3 नेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, either दिस वे और दैट वे. इट इज सिंपल एंड बेस्ट. नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा हमको लूप्स वगैरह बनाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. सो दिस इज द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन वन डायरेक्शन. सपोज आई यूज 10 mm dia bar. Suppose what about the number of bars required? Area of one bar, the 659.05 divided by the area of one bar, pi by 4 into 10 square. I get the number of bars required. कितने लगेंगे number of bars? Suppose I assume 10 mm as the diameter of bar. What about the number of reinforcement bar required so as to resist the bursting in one direction?
8.39। हमको कम से कम कितना प्रोवाइड करने पड़ेगा? एक डायरेक्शन में 3, एक डायरेक्शन में फिर 3, एक डायरेक्शन में फिर 3, कम से कम अगर मैं 3 नेट प्रोवाइड, एंड दैट इज द लीस्ट, सो गो फॉर 9 बार्स। हमको कम से कम 9 बार तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, मिनिमम 9 बार वी नीड टू प्रोवाइड। 3 बार in vertical direction for one net, 3 for the another, minimum 3 nets, minimum 3 nets, minimum 3 bars in each net, in each direction। तो 3 वर्टिकल है तो 3 हॉरिजॉन्टल भी रहेगा। सो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड। अभी कितना देखिए, कहां से कहां तक प्रोवाइड करना है आपको? 39 से 390। सो यू डिवाइड द स्पेसिंग जितने भी रहेगा। पहला बार यहां रहेगा से एट 40 mm, दूसरा बार सपोज यहां पर रहेगा एट सम 390 mm, और जो बीच का बच गया है भी बाकी यहां पर एक प्रोवाइड कर दीजिए। दैट इज हाउ वी विल प्रोवाइड द नेट इन वर्टिकल एज वेल एज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस इज टू रेजिस्ट द बस्टिंग। इज इट ओके? So here I can say that we have done with the design of superstructure of the bridge. Is it all right? Where did we got 0.4 times of Fi? Okay. Normally, Noman, your question was, where did we got that 0.4 times of Fi? कैसे है कि there are different methods of design. पहले हम बहुत सारा पार्ट वर्किंग स्ट्रेस से करते थे। तो वर्किंग स्ट्रेस में क्या रहता था? फॉर शेयर स्ट्रेसेस कंसीडर 0.4 टाइम्स ऑफ Fy, फॉर एक्सियल टेंशन कंसीडर 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, फॉर बेंडिंग कंसीडर द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस एज 0.66 times of Fy. These were the guidelines when we are solving problem by working stress method. ऐसे पहले इन स्टील में परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस हम कितना कंसीडर करते थे? फॉर शेयर वी यूज्ड टू कंसीडर 0. गाइडलाइन थे कोड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए 0.4 टाइम्स ऑफ Fy, फॉर एक्सियल टेंशन 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, फॉर बेंडिंग 0.66 टाइम्स ऑफ Fy। तो wherever we don't have a clear guidelines available in the code, हमारे पास जो नॉलेज है, जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, जो चला आ रहा है पहले से और सेफ है, वो गाइडलाइंस हम रेफर करके सॉल्व करते हैं। wherever we don't have very clear guidelines in the code, तो हमारे पास जो उससे पहले का नॉलेज है और जो सेफ है हम वो कंसीडर करते हैं और चलते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये आईआरसी में पंचिंग के लिए कुछ डिस्कशन नहीं है, टू अवॉइड द पंचिंग ऑफ दिस प्लेट, तो हमने क्या किया 1343 का पंचिंग का गाइडलाइन लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर उसने कोड के अंदर जो प्रीफेस रहता है उसके अंदर लिख देता है wherever you don't find very clear guidelines in this code, so whatever other Indian standard relevant codes are available, those are to be used to solve the things। ऐसे किसी भी आईएस कोड में आईआरसी में लिखा रहता है कि wherever you are not finding very clear clauses for any of the thing, उससे रिलेवेंट जो हमारे दूसरे इंडियन स्टैंडर्ड्स है वहां के गाइडलाइंस आप रेफर कर सकते हो। So it is from there. Okay, fine. So here we can conclude that we have done with the design of a pre-stressed concrete deck slab bridge। 2 lane सुपर स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर दिया है। ओके, अब अगर यही क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या था? द कैरेज वे विड्थ वाज 7.6 मीटर, span was 9 meter, the characteristic composition of concrete was 60 MPa, the initial strength of the concrete at the time of transfer was 50 MPa, right? Bearing coat 100 MPa, footpath on either side 1.5 meter, all the things are same। यहां पर हमने लाइव लोड क्या दिया था? पहला आईआरसी क्लास ए ट्रैक
व्हीकल, पहले ये था. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस, सपोज वी आर हैविंग IRC 70R ट्रैक्ड व्हीकल. डिफरेंस क्या आएगा? व्हाट विल नाउ रिप्लेस दिस बाय दिस व्हीकल. व्हाट विल बी डिफरेंस इन द सोल्यूशन? हमारा जो भी डिजाइन प्रोसीजर था, will there be any difference in the design procedure? No, the design procedure remains same. सिर्फ डिफरेंस कहां पर आ जाएगा? एनालिसिस में. Why there will be difference in the analysis? Because now the imposed load is changing. All other things are same except the imposed load. पहले हमने IRC क्लास A ट्रैक्ड व्हीकल के लिए सॉल्व किया. Now suppose we are solving it for IRC 70R ट्रैक्ड व्हीकल. तो डिफरेंस डिजाइन में बिल्कुल नहीं रहेगा. वॉट एवर वेर द डिजाइन गाइडलाइंस, those design guidelines we have discussed everything in very detail. All those design guidelines remain same. The only difference will be here in analysis. What difference will be there? See, अभी मैं इसको सिर्फ एनालिसिस का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ. I will not solve, I will not analyze. This is your homework. आप कर सकते हो. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ क्या रहेगा. क्या करेंगे? गाइडलाइंस के अंदर क्या दिया था? 7.6 मीटर कैरेज वे विड्थ. Same thing, 1.5 footpath on either side. Okay. What is next? 100 mm wearing coat. चलिए, okay, understood. How will it be? ऐसे रहेगा. यहाँ पर है 100 mm wearing coat. Footpath. The depth of this curve above the wearing coat is 300 mm. Railings. जैसे पहले था वो. This is the top view. Oh, sorry, this is the cross section. What it will be in top view? Footpath, footpath. कितना स्पैन दिया था? 9 मीटर. How much this carriageway width is? 7.6 meter. What is the footpath? 1.5 on either side. Right? This is the longitudinal view. This is the direction of motion. Okay. How will it appear longitudinally? Longitudinally मुझे ऐसे दिखेगा. ये वेरी गुड. अगर मैं सेक्शन लेता हूं इसका इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर. ओके. अगर आपको याद रहेगा हमने शुरू कहां से किया था? हमने शुरू किया था डेप्थ ऑफ डेक स्लैब. कितना रहना चाहिए? 50 mm पर मीटर. अज्यूम 50 mm पर मीटर स्पैन. दिस इज अ वन वे स्लैब क्योंकि सपोर्ट दो एंड पर है. अदर टू आर नॉट सपोर्टेड. तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर है. अगेन इट इज सेम 450. सो दिस डेप्थ इज 450. वेयरिंग कोट इज 100 mm. दिस इज 300 mm. 100. This is 300 mm. This is 1.5. All the things are available. Is it all right? क्योंकि 9 मीटर है, so that will come to 450 mm. फिर उसके बाद क्या किया था हमने? डेड लोड कैलकुलेशन. डेड लोड कैलकुलेशन में क्या किया था? Assume that the width is from the wearing coat, so it will be the same thing. The 1 meter wide strip is considered from the carriageway. तो फिर हमने किया था ये कैरेजवे का कितना रहेगा, फिर वेयरिंग कोट का कितना रहेगा, फिर हमने बोला था कंसीडर 1 मीटर स्ट्रिप फ्रॉम द फुटपाथ. उसके ऊपर कौन कौन से लोड आएंगे आपको सब पता था. इसके लिए बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट, इसका शेयर फोर्स, इसका शेयर फोर्स और इसका शेयर फोर्स. तो हमारे पास अवेलेबल था डेड लोड शेयर फोर्स ड्यू टू डेक स्लैब, डेड लोड शेयर फोर्स due to wearing coat when the 1 meter wide strip is considered there.
फिर हमारे पास अवेलेबल था डेड लोड, डेड लोड शेप, अच्छा डेड लोड बेंडिंग मोमेंट भी अवेलेबल है, डेड लोड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेक स्लैब, डेड लोड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वेरिंग कोड, ये सब अवेलेबल है। फिर डेड लोड शेयर फोर्स ड्यू टू, यहाँ से जब हमने 1 मीटर वाइड स्ट्रिप किया था फुटपाथ में से, डेक स्लैब प्लस फुटपाथ प्लस रेलिंग एंड डेड लोड बेंडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ द डेक स्लैब, फुटपाथ एंड रेलिंग, ये सब वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के। उसके बाद क्या किया था, वी हैव एनालाइज, ये तो हमारे पास एनालिसिस आ गया है, डेड लोड का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या किया, फॉर लाइव लोड और इम्पोज लोड, लाइव लोड और इम्पोज लोड के लिए क्या करेंगे, फॉर लाइव लोड और इम्पोज लोड व्हाट विल वी डू, फॉर बेंडिंग मोमेंट, live load bending moment, what we need to do, we have to place the vehicle such that it must produce the maximum bending moment। अभी ये IRC 70R व्हीकल होता कैसे है, IRC 70R vehicle is same as IRC class AA tracked vehicle, please refer IRC 6, प्लीज रेफर IRC 6। ये व्हीकल होता कैसे है, अगर मुझे व्हीकल पता है कैसे है, डायमेंशंस क्या है, कितना लोड है, तो फिर मुझे मिलेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंसीडर करना है। प्लीज रेफर IRC 6, प्लीज रेफर IRC 6, इट इज पेज नंबर 10, इट इज क्लॉज 204। What is that clause is about? Will someone please write in the chat box what is that clause is about? Page number 10, clause 204 of IRC 6 2017. Just to confirm that you are referring the IRC. मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ और आप भी पैरेलल में रेफर कर रहे हो। Very good, thank you Amir, you are right. It is page number 10, it is clause 204. This is about live loads. 204.1 details of IRC loading for bridges classified under 201.1. The design live load shall consist of standard wheeled or tracked vehicles or train of vehicles as illustrated in figure 1, 2 and 4 and annexure A or special vehicle as per clause 204.5 if applicable। देखिए ये जो फिगर दिया है, फिगर 1 on the same page, arrangement for 70R wheeled vehicle, we are not talking about the wheeled vehicle, we are talking here about the tracked vehicle। तो tracked vehicle कैसे है, that is sketched here। how is the tracked vehicle, देखिए ऐसे है tracked vehicle, this is one track, here is the main body, here is the another track, ये track है। क्या ये वैसे ही नहीं है जैसे हमारा 70R व्हीकल था, क्लास AA व्हीकल था, क्लास AA में ये डायमेंशन दिया था हमको। अगर मैं क्लास A को इसके बाजू स्केच करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, दिस वाज 1.2, दिस वाज 0.85, दिस वाज 0.85। द width, what is here, here you please refer for 70R। अच्छा, how much was the total load, the total load was 700 kilonewton, यहाँ पर 350 आता था 350, so here also it is given that for 70R it is 35 ton to the left, it is 35 ton to the right, it means that the total weight is 700 kilonewton, right? The total load is 700 kilonewton and that will be shared by two tracks, so the total load here is also 700 kilonewton। class ये this is class AA track vehicle, same है, main body two tracks, main body two track, if it is 700 it will be shared by two tracks equally, 350 and 350 kilonewton। अच्छा, how much was this outer to outer of the wheels or the tracks, 0.85 0.85, so it was 1.7 plus this 1.2, it was 2.9 meter। and what is given here, if you see from outer to outer of the track,
The total width here is again equal to 2.9 meters only. जैसे यहाँ पर 2.9 था, यहाँ पर भी 2.9. Total was 700. Here also it is 700. Then what is the difference between the two vehicles? This is class AA. This is 70R. तो ये दोनों में difference क्या है? Now here is the difference. This contact width was 0.85. Here the contact width is 0.84. 0.84. It means that the width of this main body or the inter body, it was 0.05. 0.05 इसका मतलब 0.1 ज्यादा रहना चाहिए. If it is 1.2, this will be 1.22. Is it right? 1.22 plus 0.84 का 2 कितना हो जाएगा? ये 8 और 2 16 plus 6 और ये हो जाएगा 1. So how much this will be? 2.9. Correct. क्योंकि overall width is 2.9 that is given. So this internal is 1.22. And how much it was earlier internal for the IRC class A vehicle? 1.2. अभी कितना हो गया है? 1.22. This is one difference. Have you got the idea? Thank you South Khan. Thank you. Have you got the idea what is the difference between the two vehicles? Load उतना ही है, outer to outer dimensions उतना ही है, inner dimensions are getting changed. The track width was 0.85, this track width is 0.84. The inter body dimension was 1.2 and the internal body dimension are 1.22 meter now. This is one difference. What is the another difference? The another difference is dimension in the direction of length. See, 4570 ये है व्हीकल, ये है रूलर्स. How much was the center to center distance between this contact here? What was the length of vehicle that was in contact? कितना था पहले? For when it was IRC class AA, it was only 3.6 meters. How much it is here? 4.57 meters. तो dimension of vehicle ज्यादा है. Earlier the contact length was only 3.6 meters जब हम IRC class A track vehicle लिए है. How much it is here? It is 4.57 meters. This is the difference. Right? This is the difference between means सिर्फ vehicle का dimension में difference है. Contact length was 3.6. Here the contact length is 4.57. The load is same, 700 and 700 kilonewton. आपको क्या लगता है? The intensity of load will be more because of IRC class AA vehicle या the intensity of load will be more because of 70R track vehicle या दोनों में intensity of load will be same. अगर किसी ब्रिज पर से मैं IRC class AA vehicle पास करता हूं, if I am passing 70R vehicle from the same bridge, in which of the two cases the intensity of load will be more on the bridge? Yeah, the intensity of load will be same on the bridge in both the cases. Who will reply this question? Intensity of load will be equal in both the cases when the vehicle is passing over the bridge. It will be more when 70R is passing, or it will be more when class AA tracked vehicle is passing. In which case the intensity of load will be more. या दोनों भी equal ही रहेंगे जब दोनों vehicle, because the total load is same, 700 kilonewton. Will someone please answer whether the imposed load will be same or it will be different, the intensity of imposed load on the bridge when that IRC class A track या IRC 70R vehicle is passing. In which case the intensity of load will be more. क्या दोनों टाइम में intensity of load same रहेंगे ब्रिज पर? कोई आंसर करेगा क्या? यहाँ कॉन्टैक्ट लेंथ 3.6 है, यहाँ कॉन्टैक्ट लेंथ 4.57 है.
Right, you are correct, South Khan. It will be different. You are right, South Khan. Why it will be different? The contact length here is only 3.6, whereas in case of 70R it is 4.57. It means that the load will get distributed on a greater length. The load will get distributed on a greater area. When the load is getting, the intensity of load is same, the magnitude of load is same, 700, 700. So the magnitude of the load is same, but as the load is getting distributed on a greater area, the intensity of load will be less in case of 70R, and the intensity of load will be more in case of IRC tracked vehicle, because in that case the length of contact is less, so the load will get distributed on a lesser area. Here the load will get distributed on a greater area. So when the same load is getting distributed on a greater area, the intensity will be less. Lesser the intensity, the moment developed will be less. Fine. So here I will consider the vehicle to be acting at the center, and this is the contact length. It is 4.57 meter. So what is the length on which the effect of this distributed load will be? How to consider? The dispersion effect we have to consider at 45 degrees angle. This we have learned already. We had referred the IRC clauses. अभी हम वापस वापस जाकर वो सब क्लॉजेज रेफर नहीं करेंगे. इसके लिए हमने पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. आपने वापस वो पूरे वीडियो लेक्चर रेफर करके सब नोट्स बनाना चाहिए कि वेयर वी आर गेटिंग एंड व्हाट इज द रीजन व्हिच क्लॉजेज वी हैव रेफर्ड. So it is 4.57, this 45 degree. So it means that it will be 4.57 plus twice of this 0.1 is the bearing core thickness, plus this depth of the deck slab will be 0.45. So it is 0.5.22. So it is 4.57 plus 1.1. So it is nothing but 5.67 meters. This is the span on which the effect of this load will be. Pehla, the load was getting distributed on comparatively smaller area. Now the load is getting distributed on a greater area. So how will it appear? ये ऐसे दिखेगा. This is a 9-meter span beam, and there is a load acting here, and this will be acting for centrally 5.67 meter. तो कितना बच गया है? 9 minus 5.67, 3.3 divided by 2, so that I will get this dimension from each side. It is 3.33 divided by 2, 3.33 divided by 2. Is it right? Is it 3.33? 5 और 3 8. No. Okay, fine. So this is the intensity of load. It is placed symmetrically at the center. फिर क्या करना पड़ेगा? We have to verify. ये ब्रिज पर यहां पर मैंने एक व्हीकल कंसीडर किया है, IRC 70R vehicle that is placed at the center. Do we have any other live load acting? उसके बाजू में कोई दूसरा व्हीकल आएगा क्या? उसके आगे या उसके पीछे कोई दूसरा व्हीकल आएगा क्या? सो प्लीज रीड द क्लॉजेस. द नोट, सी इट इज ऑन पेज नंबर 10. ये जो नोट दिया है ये मैं रीड कर रहा हूं. फिगर 1, क्लास 70R व्हील्ड एंड ट्रैक्ड व्हीकल, क्लॉज 204.1. नोट. अब ये यहां पर सब गाइडलाइन दिए हैं, हमने देखना चाहिए. The nose to tail spacing between the two successive vehicles shall not be less than 90 meter for tracked vehicle. For wheeled vehicle, spacing between the successive vehicles shall not be less than 30 meter. अगर ये tracked vehicle है, IRC 70R, if it is tracked vehicle, if it is IRC 70R, wheeled vehicle, तो कितना रहना चाहिए? नोज टू टेल डिस्टेंस, नोज टू टेल डिस्टेंस मिनिमम मस्ट बी 90 मीटर. नोज टू टेल डिस्टेंस मिनिमम मस्ट बी 30 मीटर. व्हाट वी हैव कंसीडर हियर? IRC 70R ट्रैक्ड व्हीकल. अगर एक व्हीकल है तो उसके पीछे, इफ दिस इज वन व्हीकल,
इसके पीछे दूसरा व्हीकल यहाँ रहेगा, ये डिस्टेंस नोज टू टेल, सो दिस इज टेल ऑफ वन व्हीकल, दिस इज नोज ऑफ द अनदर व्हीकल, नॉट सेंटर टू सेंटर। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस cannot be more than less than 90 meter. Tail of one vehicle says this is the direction of motion. This is tail of one vehicle, this is the nose of another vehicle which is succeeding to it, and the minimum distance must be 90. अगर ये wheeled vehicle रहता है तो wheeled vehicle में भी ये जो nose to tail distance है, say this is one vehicle, right? So this is another vehicle. So in this case, this is the direction of motion. So in this case also the minimum distance must be equal to 30 meter if it is wheeled vehicle. What is the case here? 70-yard tracked vehicle. If it is IRC 70-yard tracked vehicle, the nose to tail distance between the two successive vehicles, right, must be minimum 90. And what is the span of this bridge? 9 meter. इसका 90 मीटर पीछे 90 मीटर आगे दूसरा व्हीकल रहेगा. So there is no scope for any other vehicle behind or ahead of this on the bridge. ब्रिज पर इसके पीछे या इसके आगे कोई दूसरा व्हीकल नहीं रहेगा, बिकॉज द स्पैन इज 9 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव व्हीकल्स, आइदर लेट द व्हीकल बी अहेड और बिहाइंड, नोज टू टेल मस्ट बी मिनिमम 90. तो कोई दूसरा व्हीकल या तो उसके पीछे या उसके आगे कोई दूसरा व्हीकल नहीं है. देयर इज नो अदर व्हीकल देयर. नाउ बाय द साइड, देखेंगे साइड में क्या है. प्लीज रीड हियर सेकंड पार्ट, इट इज ऑन पेज नंबर 11. आपके पास कोड रहना बहुत जरूरी है यार. अगर आप कोड नहीं रखोगे, मैं बोलते रहूंगा, तुम सुनते रहोगे, देयर इज नो सेंस इन दैट. Second part of that clause, it is on page number 11. For multi-lane bridges and culverts, each 70-yard loading shall be considered to occupy 2 lanes and no other vehicle shall be allowed in these 2 lanes. Right? The passing crossing vehicle can only be allowed on lanes other than these 2 lanes. Load combination is shown in figure 6 and 6A. अभी ये what is the nature of this bridge? How many lanes we can consider? It is 7.6 meter. If it is 7.6 meter, then we can consider this as 1 lane, 2 lane और 3 lane. हमने इसको कितना लेन ब्रिज कंसिडर करना चाहिए? ये कितने लेन रहेगा? देखिए 1 लेन के लिए अगर आप देखेंगे तो 4.25 मीटर का एक क्लॉज है कोड में. दिस इज इन IRC 5. 2 लेन्स के लिए कितना रहना चाहिए? अगर आप देखते हो तो वहां पर दिया है ऐसे, अगर एक व्हीकल है, दूसरा व्हीकल है, तो क्या दिया है? सी द मैक्सिमम विड्थ ऑफ दिस व्हील इज 500, तो उसका हाफ हो जाएगा 0.25, दैट इज 0.5/2. दिस मिनिमम क्लियरेंस इज गिवन है 0.15. ये जब हम IRC क्लास ए लोड डिस्कस करेंगे ना, क्लास ए ट्रेन ऑफ व्हीकल्स, दैट टाइम वी विल डिस्कस द थिंग इन डिटेल. और दिस सेंटर टू सेंटर ऑफ द बॉडी इज 1.8 मीटर. दिस आउटर टू आउटर ऑफ द व्हील, दिस मस्ट बी, अगेन देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस अवेलेबल. 0.4 to 1.2 मीटर्स मिनिमम यहां तक रहना चाहिए. 0.4 से 1.2 फ्रॉम आउटर टू आउटर. सो दिस व्हील अगेन इसका जो विड्थ रहेगा 0.25, 500 का हाफ. अगर मैं 0.4 भी कंसीडर करता हूं, so here again I am considering the footpath and this minimum clearance is 0.15, half of this width, क्योंकि ये जो width है वो 500 का रहेगा maximum width of the wheel for IRC class A vehicle. We will discuss the things in detail when we will discuss IRC class A loading. जब हम इसके लिए डिजाइन करेंगे ब्रिज, तो all these things we will discuss in detail. Just for the sake of understanding कि हमने कितना लेन लेना चाहिए, 0.15, ये रहेगा फिर 0.5/2, so that will be 0.25. तो भी कितना हो जाता है देखिए, 0.15 प्लस 0.25/2, सो दिस इज 0.4 प्लस ये 1.8 प्लस ये 0.25 और यहाँ पर इसका 0.25 और ये डिस्टेंस अगर हमने 0.4 कंसीडर किया है तो प्लस 0.5 प्लस 0.4. फिर ये सेंटर टू सेंटर ऑफ द व्हील इट विल बी अगेन 1.8, सो दिस इज प्लस 1.8 प्लस यहाँ से यहाँ तक रहेगा अगेन 0.4. तो ये बताइए मुझे कितना आता है? 0.4 इट इज 0.8, 1.8 1.8 दिस विल बी 3.6, 0.4 एंड दिस इज 0.9. तो कितना हो गया ये? 15 15 और 8, 3 का 3 कैरी 2,
It is 5.3. So minimum 5.3 मीटर रहना चाहिए. If I consider the minimum clearance between the two wheelers equal to 0.4, और कोड क्या बोलता है, अगर मैंने कैरेज विड्थ ज्यादा रखा तो मिनिमम क्लियरेंस मस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड मैक्सिमम वी कैन गो फॉर द मिनिमम क्लियरेंस इज इक्वल टू 1.2 मीटर. हम यहां तक मिनिमम क्लियरेंस, अगर मैं कैरेज विड्थ बढ़ाता गया तो दिस विल चेंज टू दिस 1.2 मीटर, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, दैट इज द मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड. तो दिस 0.4 विल चेंज टू 1.2. इसका मतलब कितना इसके अंदर बढ़ जाएगा, फिर अभी 0.8 बढ़ जाएगा. So 0.8 means it will be equal to 6.1 meter. It means that for two lanes 5.3 to 6.1 meter होना चाहिए with the minimum clearance for two lanes, right? This is as per IRC 6 2017. ये मेंशन किया है. Where is it? Please refer. It is available here on page number 13. Clear carriageway width 5.3 से 6.1. The varying distance G, the clear distance between the two passing or crossing vehicles 0.4 से 1.2 मीटर. तो अगर टू लेन, अगर इफ आई वांट ए ब्रिज टू बी ए टू लेन ब्रिज तो मिनिमम इतना गैप रहना चाहिए. अगर इससे ज्यादा रखा तो आई कैन नॉट डायरेक्टली कॉल ए थ्री लेन, क्योंकि थ्री लेन के लिए मुझे और एक व्हीकल पास होना चाहिए वहां से. तो उसके बाद मुझे और एक व्हीकल रखना पड़ेगा, वन व्हीकल, सेकंड व्हीकल, थर्ड व्हीकल. अगर तीन व्हीकल पास हो सकते हैं ब्रिज से, देन ओनली आई कैन कॉल दिस टू लेन ब्रिज. अगर मैंने इतना रखा विड्थ ऑफ ब्रिज तो it is 2.5, but 2.5 there is no sense in that. So that I will call as that the we can provide only two lanes. So this is minimum 6.1, 5.3 से 6.1. It is minimum. और अगर मुझे थर्ड लेन प्रोवाइड करना है तो फिर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 0.4. That is this up to center plus 1.8. This center to center plus ये सेट, जैसे अभी बोला 6.1 तक अगर हम जाते हैं तो फिर ये 1.2, तो दिस इज 0.5, 0.25, 0.25 plus 1.2, so that will be 1.7 plus 1.8 प्लस यहाँ पे और एक व्हीकल आ जाएगा तो सेंटर टू सेंटर विल बी 1.7, फिर उसका सेंटर टू सेंटर इज 1.8, देन द क्लियरेंस इज 0.4. so 0.4, 0.4 it will be 0.8. 1.8, 1.8 and 1.8 it will be 5.4. 1.7, 1.7 it will be 3.4. तो 4 और 4 8 पॉइंट, 5 और 3 और 1 9, 16, 9.6 meter. If the carriageway width is 9.6 meter, then that is a three lane bridge. For any dimension less than 9.6 meter, that must be a two lane bridge only. तो टू लेन के लिए 5.3 से स्टार्ट होकर जाता है लेस देन 9.6 मीटर, देन इट विल बी ए टू लेन ओनली. अगर 9.6 प्रोवाइड करते हैं देन इट इज थ्री लेन. एंड व्हाट इज द कैरेज विड्थ हियर? इट इज 7.6, सो इट इज विद इन दीस लिमिट्स, सो इट मस्ट बी ओनली ए टू लेन ब्रिज. समझ में आया है व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज ए टू लेन ब्रिज? क्योंकि हम इससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर मुझे थ्री लेन ब्रिज बोलना है देन द मिनिमम कैरेज वे विड्थ मस्ट बी 9.6 मीटर. इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5.3, लेस देन 9.6, सो इट इज ए टू लेन ब्रिज. अगर थ्री लेन बोलना है तो 9.6 मीटर विड्थ चाहिए. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस आईआरसी क्लास ए लोडिंग. जब हम ये लोडिंग डिस्कस करेंगे ना, वहां पर ये चीजें हमको और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है. So we will discuss all these things. Temporarily, you just understand that for three lane, the minimum carriageway width required is 9.6. It is 7.6, less than that. It is greater than 5.3 and less than 9.6. So it must be a two lane bridge.
और अगर दिस इज विद रेफरेंस टू IRC 6, IRC 5 में एक क्लॉज दिया है, अगर आपको 2 लेन ब्रिज प्रोवाइड करना है तो मिनिमम वो बोलता है 7.5 मीटर रखिए। ये जो 5.3 से लेकर 6.1 का भी क्लॉज है, 5.3 से 6.1 फॉर द 2 लेन मिनिमम, तो वो बोलता है उतने भी नहीं, उससे भी ज्यादा रखिए 7.6 मीटर। वेयर इज इट? इफ यू आर हैविंग IRC 5 यू कैन रेफर दिस। मैंने आपको बताया था फुटपाथ कितना रहना चाहिए, मीडियन कितना रहना चाहिए, इफ द मीडियन इज प्रोवाइडेड, ऑल दोज गाइडलाइंस आर देयर, दीज आर अवेलेबल इन IRC 5। आपको मैंने एक क्लॉज बताया था कि मिनिमम डायमेंशंस क्या रखना चाहिए। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 14 of IRC 5. It is clause 104.3.1, page number 40. This is IRC 5 2015. What it says: for high-level bridges constructed for the use of road traffic only, the width of carriageway shall not be less than 4.25 for a single lane bridge, 7.5 मीटर फॉर ए 2 लेन ब्रिज। देखिए क्या लिखा है, 7.5 मीटर फॉर ए 2 लेन ब्रिज एंड शैल इंक्रीज बाय 3.5 मीटर फॉर एवरी एडिशनल लेन। ये जो 3.5 क्यों ऐड करना है फॉर एवरी एडिशनल लेन, दैट आल्सो वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस IRC क्लास A। आफ्टर दिस प्रॉब्लम वी विल गो फॉर IRC क्लास A, दैट टाइम वी विल डिस्कस दिस फॉर एवरी एडिशनल लेन ऑफ द ट्रैफिक फॉर ए मल्टीपल लेन ब्रिजेस। And if a median or the verge is constructed, so that is to be considered with reference to this. Here is the clause. Width of median 104.3.5. The median width of the approach road shall generally be carried over the bridge. In case of major bridges, the median width may be reduced subject to a minimum width of 1.2 meter. अगर दो अलग अलग कैरेज वे विड्थ है, 2 लेन्स है, मीन्स कैसे कि एक जाने के लिए लाइन है, एक आने के लिए 2 वे ट्रैफिक है। तो अगर 2 वे ट्रैफिक है और हर ब्रिज 2 लेन है, सो इन बिटवीन वी नीड टू प्रोवाइड द वर्ज। ये है ऐसे, इधर ट्रैफिक ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, दिस इज मिनिमम 2 लेन, ये भी मिनिमम 2 लेन है। तो ये जो बीच का वर्ज है, दिस वर्ज मस्ट बी मिनिमम ऑफ 1.2 मीटर्स। द गैप that is called as the median or the verge. The median width of the approach road shall generally be carried over the bridge. In case of the major bridges, the median width may be reduced subject to a minimum width of 1.2 meter. Is that right? Width of footpath. When a footpath is provided, its clear width shall not be less than 1.5 meters. तो गाइडलाइंस अवेलेबल है कोर्ट में सब हर जगह, कौन क्या कितना रहना चाहिए। So here, as the carriageway width is 7.6 meter, so we will consider this as a 2 lane. और IRC 6 क्या बोलता है, when it is a 2 lane bridge, तो वहां पर for every 2 lane we need to consider only one IRC class A या only one IRC class 70R vehicle। जहां पर भी 2 lane for A है, वहां पर 70R का या वहां पर IRC क्लास A का एक ही व्हीकल जाएगा। तो दिस इज ए 2 लेन ब्रिज, तो IRC क्लास A या IRC 70R का एक ही व्हीकल रहेगा, इसके एडजेसेंट कोई दूसरा व्हीकल नहीं रहेगा। सो देयर इज नो व्हीकल बिहाइंड, देयर इज नो व्हीकल अहेड, देयर इज नो व्हीकल एडजेसेंट टू दिस। So this is the only imposed load which will be acting on the structure. Now where the vehicle is to be kept? The vehicle was kept centrally along the span. Span में तो हमने उसको centrally रख दिया था यहाँ पर, at the center. अभी across कैसे रखना है मुझे उसको? How to keep it across? Please refer IRC 6. What is mentioned here? Please read. The maximum load for the wheeled vehicle is 21 for अच्छा 2 axle space not more than 1.22। तो 1.22 हमने दोनों ट्रैक का देखे, इनसाइड का कितना डिस्टेंस है, 1.22 है। अभी क्या देता है, क्लास 70R, आई एम रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 11 ऑफ IRC 6 2017, इट इज फोर्थ पार्ट ऑफ दैट। क्लास 70R loading is applicable only for the bridges having carriageway width of 5.3 and above। 5.3 and above क्यों दिया है, 1.2 plus 2 into 2.9, 2 कैसे, मिनिमम 5.3 क्यों चाहिए बोला है,
ये मिनिमम क्लियरेंस हम कितना कंसीडर करते हैं? व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस? दिस इज फुटपाथ. हाउ मच वी कंसीडर द मिनिमम क्लियरेंस? 1.2. और ये व्हीकल का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 2.9. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5.3. सॉरी, अगेन 1.2 द मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम द ट्रैक. तो कितना हो जाएगा? 1.2 1.2 विल बी 2.4. This is 2.4 is the body of the vehicle. So that is 2.9. So how much that will be equal to? 5.3 मीटर. इसके लिए क्या बोला है कि अगर मैं 2 लेन प्रोवाइड करता हूं तो मिनिमम कैरेज वे विड्थ मस्ट बी 5.3 मीटर मिनिमम. इससे कम में तो हमने पास करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मिनिमम क्लियरेंस इतना है. लेकिन IRC 5 ने क्या बोला है? अगर 2 लेन रखना है तो 7.5 मीटर रखिए. तो वी विल स्टिक टू दिस. हालांकि इतना भी काफी हो जाना चाहिए, सब्जेक्टेड टू द मिनिमम क्लियरेंसेस. मेन बॉडी विड्थ इज, अगर IRC 70R रहो या IRC क्लास AA रहो, द विड्थ ऑफ द बॉडी इज टोटल 2.9 अप टू आउटर ऑफ दीस एजेस. मिनिमम क्लियरेंस इज 1.2, सो दैट ऐड अप टू 5.3. तो 5.3 में हम 2 लेन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन IRC 5 बोलता है मिनिमम हमने 2 लेन के लिए 7.5 मीटर रखना चाहिए. सो वी विल स्टिक टू दैट. यहाँ क्या लिखा है? क्लास 70R लोडिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ब्रिजेस हैविंग कैरिजवे विड्थ ऑफ 5.3 मीटर एंड अबव. और उसका कैलकुलेशन भी बताया, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2.9 इज 5.3. द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द रोड फेस ऑफ द कर्व एंड द आउटर ऑफ द व्हील और ट्रैक C shall be 1.2. See, this is important to us. कितना लिखा है उसने? 1.2 मीटर must be the minimum clearance. और दूसरा क्या दिया? द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द आउटर एजेस ऑफ द व्हील्स or tracks of passing or crossing vehicles for multi-lane bridges shall be 1.2 meters. Agar because of any reason, say there are 2 vehicles which are passing or crossing, अगर ये बस 4 लेन ब्रिज होता, अगर 4 लेन ब्रिज रहता तो हम फिर हर 2 लेन के लिए एक IRC का 70R बोलिए या AA बोलिए, हम 2 व्हीकल कंसीडर करते हैं. For 2 lane of A, it is 1 vehicle of AA या 1 vehicle of 70R. अगर ये टोटल 4 लेन है सपोज, तो फिर यहाँ पर एक व्हीकल ये 2 लेन के लिए, दूसरे 2 लेन के लिए एक व्हीकल, ऐसा रहता. Then what must be the distance between these two outer of the wheels? This must be minimum 1.2 meter. It is given in the code. Where is it? It is IRC 6. Clause 204.1.1. I am reading from page number 11. It is 5th part of that clause. The minimum clearance between the outer edge of wheel or track of passing or crossing vehicles for multi-lane bridges shall be 1.2 meters. Is that right? So this is all about the guidelines of IRC 70R. ये सब क्लास AA के लिए भी एप्लीकेबल है. जो क्लॉजेस सब 70R के हैं, वही सब क्लासेस IRC क्लास AA टैग्ड व्हीकल के लिए भी है. द ओनली डिफरेंस इज द डायमेंशन. वहां पर ये इनर टू इनर डायमेंशन 1.2 है, यहाँ पर 70R के लिए 1.22 है. वहां पर डायमेंशन 0.85 है, यहाँ पर ये डायमेंशन 0.84 है. वहां पर कॉन्टैक्ट लेंथ 3.6 मीटर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंथ 4.57 मीटर है. So there is only difference in the dimension of vehicle. The rest all guidelines, all clauses are same. Is that okay? The only difference in the dimension of the vehicle. सिर्फ व्हीकल का 70R में और क्लास AA में जो डिफरेंस है, that is only in the dimension. All the clauses and guidelines are same. चलिए, now come to this. व्हीकल अलाउ कैसे रहना चाहिए, कितना डिस्पर्शन रहेगा, कहां तक उसका इफेक्ट आएगा, दैट वी हैव डिस्कस. नाउ वेयर वी हैव टू पुट, इसको सेंटरली रखा है एंड मिनिमम क्लियरेंस 1.2. सो दिस इज द ट्रैक, मेन बॉडी, अनदर ट्रैक. कितना रहेगा? 1.2. व्हाट इज फुटपाथ? 1.5. How much this contact width is here for the track? 0.84. क्यों आ गया 0.84? 70R है. अगर क्लास A रहता तो 0.85 रहेगा. वो आपको सब समझ में आना चाहिए, क्या व्हीकल दिया और कितना लेना चाहिए. The internal distance is 1.22. How much is remaining distance will be?
हमको माइनस करना पड़ेगा टोटल 1.5 प्लस 1.2 प्लस 0.84 प्लस 1.22 प्लस 0.84. दिस टोटल विल बी इक्वल टू 2.9. तो ये कितना हो गया 1.5 प्लस 1.2 2.7. दिस इज 2.9. So that is nothing but 5.4 meters. Is that right? 5.6 meters. ये टोटल था 7.6 meters, जिसमें से 5.6 मीटर माइनस हो गया है. So how much is the remaining 3 meters? या 2 meters? What is it? Is it correct? 1.5 meter, 1.2 meter, 0.8, 1.2. This the total will be 2.9. So it is 1.5, 1.4. It is 2.7. This is 2.9. So that will be 5.6. ये टोटल 7.6 यहाँ नहीं था. ये कितना रहेगा? हाउ मच? दिस इज 1.5. अच्छा, ये भी ऐड कर लेते हैं. हाउ मच वाज द टोटल? ये 1.5 अगर मैंने कंसीडर नहीं किया तो दिस विल बी ओनली 1.2. 1.2 प्लस 2.9 4.1. This was 7.6. 7.6 minus 4.1. So it is 3.5 meter. So this distance is 3.5 meters. I have got all the dimensions. कि कौन कहाँ है. Fine. The vehicle is to be kept at a minimum clearance here. Now get the value of B effective. How we can have? So that I will know for how much area that it is getting dispersed. आपको पता है अल्फा A in bracket 1 minus A divided by L naught plus B1. What is alpha? It depends upon whether it is simply supported or continuous slab. It depends on the basis of B by L naught. B is the total width on which the dispersion is possible. 1.5 plus 7.6 plus 1.5 will get this B. L naught is the span. Get this ratio. It is a simply supported slab. Get the value of alpha. You will have the value of alpha. A, the position of concentrated load. I am talking about this concentrated load. So here is the concentrated load. This is the nearer support. It is equally spaced from the two ends. So get this value. That will be half of that. So you will have the value of A. So it is 1 minus A divided by L naught. You will have all the values. Plus B1. B1 is nothing but ये जो vehicle है perpendicular to the direction of the span, right? From the varying port only, what is the dispersion? So that is this 0.84 plus angle of dispersion is 45. So it will be 2 into 0.1, and you will have the value of B1. ये सब अवेलेबल है. You will get the value of B effective. फिर उसको हम हाफ कर देंगे. तो सेंटर से एक साइड में कितना जा रहा है? ये फुटपाथ के बाहर जा रहा है, फुटपाथ के अंदर ही रहेगा, क्या रहेगा? डेट यू हैव टू सी. फिर फ्रॉम दिस सेंटर लाइन इधर कितना गया है? फ्रॉम दिस सेंटर लाइन ये कितना जा रहा है? सो यू विल हैव दिस पैच ऑन विद द इफेक्ट ऑफ दिस लोड विल बी राइट. दिस इज द बी इफेक्टिव नेट. हमने लास्ट टाइम में सब किया है ये. अब जो पूरा प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा. आई एम नॉट सॉल्विंग. सो दिस इज द पैच और विद द इफेक्ट ऑफ दिस लोड विल बी. फिर हम क्या करेंगे? द टोटल लोड इज 700 डिवाइड बाय दिस टोटल एरिया. ये लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना है? सो यू विल हैव द हाउ मच दिस लेंथ विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पैन. दैट विल बी 5.76. हाउ मच दिस विल बी? इट विल बी बी इफेक्टिव नेट. सो डिवाइड बाय दैट एरिया मल्टीप्लाइड बाय इंपैक्ट फैक्टर. इंपैक्ट फैक्टर क्या है? सो एज टू अकाउंट द डायनामिक इफेक्ट ऑफ लोड. So as to account the dynamic effect of load. अगर ये what is the span? It depends on so many different things. पहला तो लोडिंग है. IRC क्लास A है, 70R है, क्लास A है, क्लास B है. What kind of loading it is? It depends on that. Second, it depends whether it is tracked vehicle or wheeled vehicle. Third, it depends on the basis of what material we are using for the construction. RCC है या स्टील है, प्रीस्ट्रेस्ड है. फिर इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन. तो हमको पता है इंपैक्ट फैक्टर कहां से लेना है. दैट इज टू अकाउंट द डायनामिक इफेक्ट ऑफ द व्हीकल. यू विल हैव द इंटेंसिटी ऑफ लोड. फिर हम कंसीडर करेंगे कंसीडर द 1 मीटर वाइड स्ट्रिप. सो मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दैट यू विल गेट इन किलो न्यूटन पर मीटर. सो यू विल हैव द इंटेंसिटी. देन स्केच द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. यू विल हैव लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट. शेयर फोर्स के लिए क्या करना है आपको? द सेम व्हीकल now we have to place close to support such that the dispersion effect must end here.
So this is how it will be now. If it is the case, फिर ये कैसे रहेगा? अगर ऐसे रहेगा तो आपको ये स्पैन मिलेगा यहाँ से, ऑन विच द इफेक्ट ऑफ दिस लोड विल बी. फिर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ये स्पैन. Now the vehicle is to be placed close to the support. फिर यहाँ तक डिस्पर्शन रहेगा. We will get this value again. The area on which the effect of this load will be. How? Same way. Alpha same रहेगा. A will get changed. Now it is placed close to the support. So this is the position of A up to the center of this. A by N0 B1 सेम रहेगा. So you will have this. ये जो लोड का इफेक्ट रहेगा, ये लोड का इफेक्ट दोनों मर्ज होंगे. That's why again you will calculate the value of B effective net. Same formula. Total load divided by the area, then multiplied by the impact factor, you will get the intensity of load. इसके the shear force diagram. Get the maximum shear force. So you will have live load shear force. After knowing all these things, after knowing all the four shear forces and bending moment, पूरा एनालिसिस पार्ट सेम है. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं. दिस इज योर होमवर्क. यू डू दिस. व्हाट विल यू डू नाउ? पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट से. फॉर इंटरनल स्ट्रेसेस, फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट द इंटरनल स्ट्रेसेस. क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए? व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस, फॉर द इंटरनल स्ट्रेसेस? ZB 1 minus eta ms plus mi divided by FBR. ZT must be more than or equal to 1 minus eta ms plus mi divided by FTR. वही फिर पूरा डिजाइन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज मोमेंट बिकॉज ऑफ डेड लोड? हमारे पास डेड लोड बेंडिंग मोमेंट, डेड लोड बेंडिंग मोमेंट, डेड लोड बेंडिंग मोमेंट ये अवेलेबल है. दिस इज बिकॉज ऑफ डेड स्लैब, दिस इज बिकॉज ऑफ बेरिंग कोड, दिस इज बिकॉज ऑफ डेड स्लैब प्लस बेरिंग कोड प्लस रेलिंग. फिर गाइडलाइंस क्या दिया है? डेड स्लैब के लिए 1, बेरिंग कोड के लिए 1.2. दीज आर द वैल्यूज ऑफ गामा एफ. तो ये जितना भी मोमेंट आया था मल्टीप्लाइड बाय 1, व्हाटएवर वाज द मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1.2. दिस इज फॉर सर्विसिबिलिटी. You will get the moment because of self weight. और यहाँ पर है gamma f is equal to 1 only. Now all these are permanent dead load. So get ms. ये दोनों में से जो greater रहेगा, the greater, that is the value of ms to be used in the calculation. mi, that imposed load is already available with you. जो भी हमने calculate किया है moment because of imposed load, so that will be available. ये वाला ms, mi ये सब available है. Eta loss factor नहीं दिया है तो हमको assume कर लेना चाहिए. FTR, APR, the permissible values of stresses, that depends on the permissible values of stress in concrete, in compression and transfer. Permissible values of stress in concrete, in compression and working. Permissible values of stress in concrete, in tension and transfer. Permissible values of stress in concrete, in tension and working. इसके लिए भी हमने IRC में रेफर किया था गाइडलाइंस. इन IRC 112 we are having the guidelines. वहां से रेफर करेंगे. वी विल ऑल दीज वैल्यूज. फिर वहां रखेंगे. यू विल गेट FTR, FBR. इज दैट राइट? आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ FTR एंड FBR, हमको सेक्शन मॉडुलस कितना रिक्वायर्ड है वो पता चलेगा. व्हाट इज द सेक्शनल मॉडुलस दैट वी हैव प्रोवाइडेड, दैट वी नो. देन वी कैन कंपेयर. इफ इट इज सेफ इट इज गुड, इफ नॉट वी हैव टू मेक द चेंजेस. ये सब IRC 112 में किया है हमने. सब पिछले लेक्चर में सॉल्व किया. कहां से रेफर करते हैं? एवरीथिंग वी नो. अगर ये सेफ आ जाता है गुड. फिर हमको क्या करना चाहिए? मिनिमम प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स. व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एक्सेंट्रिसिटी. फिर ये एक्सेंट्रिसिटी को हमको देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या उतना प्रोवाइड करने के लिए. अगर पॉसिबल नहीं है देन वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेंट्रिसिटी टू E max. फिर यू हैव टू कैलकुलेट रिवाइज वैल्यू ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स. राइट? हमको सब पता है वो उसके लिए इक्वेशंस क्या है, कहां से आ रहा है सब. फिर इसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर नोइंग दिस रिवाइज वैल्यू ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, देन वी विल गो फॉर द सेफ केबल जोन. फिर आपको समझ में आएगा कि हमने केबल कैसे रखना चाहिए. व्हाट आर द वर्टिकल लिमिट्स विद व्हिच द केबल इज टू बी प्रोवाइडेड. देन डिसाइड द प्रोफाइल, डिसाइड द एक्सेंट्रिसिटीज एट मिड स्पैन एंड एट सपोर्ट. उसके बाद क्या रहेगा? वी हैव टू चेक इट फॉर फ्लेक्चर.
और जब हम फ्लेक्सर में चेक करने के लिए आ रहे हैं, इट इज अल्टीमेट लिमिट स्टेट, दैट इज द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर। इसके लिए अगर आईआरसी में अवेलेबल नहीं है गाइडलाइन, तो हमने यूज किया था एपीएस, पीबीएस, एरिया ऑफ प्रेस्टेसिव स्टील, एट द टाइम ऑफ फेलियर डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू। ये पोस्ट टेंशन के लिए, ग्राउंडेड के लिए, ये सब आईएस 1343 में दिया है। दिस इज द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अल्टीमेट मोमेंट एक्टिंग कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अल्टीमेट मोमेंट एक्टिंग, उसके लिए भी अलग अलग गामा एफ दिया है। 1.35 फॉर डेड लोड, 1.75 डेड लोड जो वेरिंग कोट वाला है, एंड 1.5 फॉर द लाइव लोड। तो ये जो मोमेंट है बिकॉज ऑफ द डेक स्लैब, उसके लिए 1.35, बिकॉज ऑफ वेरिंग कोट जितना भी आपके पास मोमेंट अवेलेबल था उसके लिए 1.75। ये दोनों को ऐड करके देखेंगे हम क्या होता है। फिर ये जो ऑल थ्री था, दिस इज परमानेंट नेचर ऑफ डेड लोड, उसको हम सिर्फ 1.35 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फिर दोनों में से जो ग्रेटर आया था, दैट इज द अल्टीमेट मोमेंट एक्टिंग बिकॉज ऑफ डेड लोड। और जो लाइव लोड के लिए मोमेंट आपके पास अवेलेबल है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द टोटल मोमेंट acting. You will compare it with the ultimate moment of resistance. If it is same, it is good. Same for the shear force. ये जो फैक्टर्स है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर। और शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है आरसीडी का, आई बी डब्ल्यू सी डिवाइड बाय एस इन ब्रैकेट एफ सी टी एम, राइट, प्लस K1 sigma CP into FCTM square, FCTM या FCTD, I don't remember, FCTD है शायद, राइट, प्लस थीटा पी साइन थीटा। वो सब कौन सा वैल्यू कहां से आता है हमने सब देखा है। फिर कितना शेयर एक्ट हो रहा है उससे कंपेयर करेंगे। इफ इट इज सेफ, इट इज गुड। उसके बाद क्या रहेगा शेयर करने के बाद? फिर सप्लीमेंट्री स्टील। आपको पता है जो हम सप्लीमेंट्री या टेंशन स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम कितना रहना चाहिए फ्रॉम द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, फ्रॉम